Hello, guys. Welcome back to the Nifty City channel once again. What we'll be discussing as usual, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है. बहुत कुछ है नहीं डिस्कस करने को. बड़ी ऑब्वियस सी चीजें हो रही है मार्केट में. वी हैड अ टेरिफिक डे इन द मार्केट टुडे. ठीक है, वी वर एबल टू कैच मोस्ट ऑफ द मूव्स. आई एक्सप्लेन हाउ. तो आज इंट्राडे डिस्कशन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्योरली. सो वी विल बी लुकिंग एट डेली एंड लोअर टाइम फ्रेम्स. ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे. So let's dive in. If you've not subscribed to the channel, please hit the like button and subscribe to the channel. Okay, very important. Now diving in. So what do we have today? Today we had a bullish day. ठीक है, बहुत सी you can see ये range में काफी chop हुआ है. So we've had a red day, green day, red day, green day, red day, green day. So it's been very confusing. ठीक है. So the initial message in the premium group was कि don't have any particular bias कि market अभी ये red candle आ गया तो टूटने ही वाला है, या अभी ये green candle देख के कि बढ़ने ही वाला है. Don't have any kind of bias. Stick with the levels. ठीक है. I had clearly told them yesterday's day high and day low will be important. Now today what we have done is we have closed minor सा above yesterday's day high. We have taken resistance एकदम end of the day, मतलब एक touch we have taken resistance at the 21 EMA. Now what will be most important is that if we get a follow through day like this, ठीक है, एक follow through day मिल गया निफ्टी में तो मजा आ जाएगा. Then definitely we can see at least 18265 and then we'll see from there. So this is the daily time frame. Let's move down to the 1 hour time frame. अब 1 hour time frame में you can see कि here we have the 200 EMA resistance. Now if I talk about Fibonacci, another important why this level is so important where we have closed today is, अगर मैं राइट 18265 जो हमारा टॉप लगा था उधर से जो हमारा बॉटम लगा है 17761 का लेवल ड्रॉ करूँ, so this is exactly 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल. ठीक है, अगर कोई भी फॉलिंग ट्रेंड या राइजिंग ट्रेंड होता है, सो इफ दिस ट्रेंड इज फॉलिंग एंड इट रिट्रेसेस मोर देन 61.8%, देन दिस trend is not considered to be strong. So very important that we close above this right at 61.8, that is 18,072 पे के आसपास we have hit the high today. Now very important that we cross this. So now this entire zone is going to be a major resistance area जिसको market force के साथ cross करना चाहिए, फिर ही we can say. Now this is the 15-minute chart. So quickly let's go through our tomorrow's intraday plan, how we're going to plan our trades. Okay, so first I'll talk about what we did today in today's market. So today's market, right at the open, I had given a call ki today's data is not bad, data is okay, so we can stay neutral to bullish. So definitely no shorts here. Looking at the opening candle, we went up, came down. Now at this point of time, okay, if I open the 5-minute chart, I can show you guys exactly. Yeah. Now at this point of time here, ये congestion area में मैंने longs book करने का call दे दिया था market में, because you can clearly see we had a RSI divergence. New highs were being creating, but RSI was flat. Then breakdown हुआ price का, came back here. Now at this point जब VWAP से वापस जा रहा था, so I said here that retracement looks complete, but what happened is we had one more dip, final dip, and then we went up. And it was a clear call कि 18,050 के ऊपर trend is kind of confirmed. So अभी भी SGX Nifty is positive, so my bias is completely towards positive. We will also have a look at the data. Now before we have a look at the data, let's have a look at ये हटा देता हूँ retracement के what is our plan. Now if we open gap up, okay, somewhere around here, anywhere we open gap up, we have the 200 EMA resistance somewhere around here, and this is the major resistance zone. Okay, now major resistance zone क्या है हमारा, 18,127 से लेके 18,140. Okay, 18,127 से लेके 18,140. Now this is a major resistance zone. ठीक है, so if we open gap up, let the price hit this zone. ठीक है, wait for a pullback. I'm not saying pullback इधर तक ही होगा, बट वेट फॉर एनी काइंड ऑफ पुल बैक. ठीक है, पुल बैक प्राइस एक्शन देखना, पुल बैक के बाद रिवर्सल मिल रहा है, देन यू कैन गो लॉन्ग, और डेफिनेटली यू कैन वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन. ये जोन का ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली एक ट्रेंड बनेगा टुवर्ड्स द अपसाइड, टारगेट बीइंग 18265. ओके, वेरी सिंपल टारगेट. नाउ इन केस we open flat, then definitely, as soon as suppose we open flat somewhere here, or we'll open little gap down, okay, above the 21 EMA, 18,020 के ऊपर
और ये इसके नीचे एनीवेयर इन दिस जोन वी ओपन एंड वी क्रॉस दिस हाई ऑफ टुडे, देन डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा फॉर एटलीस्ट 50 to 70 पॉइंट्स आपको मिल सकता है। शॉर्ट कब बनेगा हमारा? शॉर्ट दो सिनारियो में बनेगा। इफ वी ओपन समवेयर अराउंड हियर एंड वी स्टार्ट मूविंग डाउन, तो ये हमारा एक मेजर स्विंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, दिस विल बी द मेक और ब्रेक पॉइंट राइट नाउ। ये पॉइंट मेरे हिसाब से, लुकिंग एट द डेटा ऑल्सो, आई डोंट थिंक दिस शुड ब्रेक नाउ। Okay, this is somewhere, if I tell you exactly what is the level, this is 17,926.70. This swing point should not break now in the market, according to me. Now, if we break this, then definitely lower targets we can see. Okay, पहले तो ये रहेगा 17,857, 860 के आसपास, and then definitely you'll get 17,761. On the upside, the second short scenario will be if we open somewhere here, okay, and we directly break this zone. ओके, एक गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। अगर गैप फिलिंग के बाद भी कंटिन्यूएशन दे रहा है ये डाउनवर्ड्स, तो एक शॉर्ट बनेगा टिल दिस स्विंग पॉइंट 17,926। ठीक है, उधर से यू कैन कीप ट्रेलिंग। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट बैंक निफ्टी चार्ट्स। नाउ बैंक निफ्टी इज अ लिटिल वीकर देन निफ्टी। ठीक है, आज का बैंक निफ्टी का डेटा भी काफी वीक था, आई शो यू दैट एज वेल। एंड बैंक निफ्टी वाज वेरी वीक कंपेयर टू निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में यू कैन सी बार बार बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है। यू कैन सी कितने लोअर विक रिजेक्शंस है इधर ये जोन में। ओके, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया। दिस एंटायर एरिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया, सॉरी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया। इधर से बार बार डिमांड आ रहा है, बार बार बाइंग आ रही है। सो व्हाट इज आर what do we need in Bank Nifty? First of all, we need Bank Nifty to close above the 21 EMA to confirm any kind of upside rally. Now, what are the levels we will see on the 15 minute? उसके पहले एक 1 hour chart देख लेते हैं. What is on the 1 hour chart? Now, 1 hour chart पे all we have to do is maintain this zone. ठीक है, ये एक जोन में है, जिस भी साइड ब्रेकआउट आया, so roughly if I tell you guys, breakout level is 42,715. ठीक है, नाउ इफ यू सी 42,715, उसका एक और रेफरेंस पॉइंट क्या है 42,715 का, जो हमने इधर हाई लगाया है, उधर से ये जो लो लगाया था हमने। ठीक है, सो उसका 50% इज कमिंग टू 42,874। एंड अगर मैं रिसेंट स्विंग लगाऊं, ठीक है, तो जो हमने इधर से टॉप ला के ये लगाया बॉटम, तो उधर का भी 61.8 इज कमिंग टू 42,871। सो यू कैन से 42,900 के ऊपर this will be confirmed uptrend. According to me, I'm maintaining this. HDFC Bank will give support. अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, तो मैक्सिमम अपसाइड यू आर गोइंग टू गेट इन HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट बैंक निफ्टी बीइंग वेरी चॉपी। आज HDFC बैंक ऑलमोस्ट 1.5% पॉजिटिव है, वेरी गुड रिजल्ट एज वेल। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द 15 minute चार्ट एंड मेक आवर प्लान. So what is the plan? Now, Bank Nifty mein plan is very simple. So Bank Nifty, if we are looking for a trade on the upside, definitely I will look to trade in Nifty, not in Bank Nifty. Reason क्या है कि इधर काफी हमारे पास रेजिस्टेंसेस आएंगे। सबसे पहले तो प्रीवियस डे हाई आएगा, ठीक है, फिर ये स्विंग आएगा एक, उसके बाद वी विल हैव दिस हाई. Okay, so we are going to have multiple resistances. So data is also not good. So I believe Bank Nifty can touch this point 42,700 again, but I don't think you will get that a big rally in Bank Nifty as much as you will get in Nifty. Okay, because Nifty में काफी कंसोलिडेट हुआ है निफ्टी. बैंक निफ्टी प्रीवियसली बहुत अच्छा रैली दिया था, उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है. सो आई बिलीव निफ्टी कैन गिव, बट लेट्स सी, लेट्स नॉट हैव अ बायस. ओके, सो समवेयर वी ओपन, एनीवेयर वी ओपन गैप अप अराउंड हियर, सो आई विल बी कॉशियस. You can wait. Always don't take a entry right at the open. Wait for a pullback and then take a entry. That would be a smart thing to do. Lower side, again, Bank Nifty में lower side will also be tricky. Lower side में क्या है? Even if we cross previous day low, okay, one sec. Even if we cross previous day low, you will have supports here. ओके, तो ऐसा नहीं है प्रीवियस डे लो के नीचे डायरेक्टली ट्रेड मिलेगा. यू विल हैव सपोर्ट्स हियर. सो डेफिनेटली देयर आर बिग रेंजेस टू प्ले. ओके, सो सपोर्ट रेंजेस 41,570 टू 41,840 एंड रेजिस्टेंसेस 42,716 टू 42,904. ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस है, जोन्स है.
Okay, so if you want to be, if you're an option buyer in Bank Nifty, if you're an option seller, then you can just do straddles and stuff in this range and wait until a breakout and then do adjustment. But if you're an option buyer, my sincere request to you would be, if you want to play it safe, wait for this support to break 41,569 to break to take a trade, or wait for 42,904 to break for a upside trade. जो भी side break होगा, you will get at least 1,000 point move on either side. Okay, so wait for that patiently. I know it's very difficult to wait and not trade. Trade in Nifty. Nifty is a little more easier right now to trade. Right now, if talking about stock, if I have to talk about a particular stock, I can talk about HDFC Bank. But before that, I would look at the open interest. ठीक है. अब open interest में why my bias is towards the bullish side in Nifty is, you can see today आज काफी unwinding हुई है call side पे. ओके, काफी लोग ने लॉन्ग अनवाइंड शॉर्ट कवर्स किए अपने. सो डेफिनेटली इट लुक्स लाइक कि अभी अपसाइड मोमेंटम बनेगा. वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 17,900 नाउ. ओके, 18,000 पे एक फाइट है, बट एज सुन एज वी क्रॉस 18,000, आई बिलीव एटलीस्ट टिल दिस 18,200 तक एक मूव वेरी मच पॉसिबल है. वी मे क्रॉस दैट ऑल्सो. सो लेट्स सी. बैंक निफ्टी में, सी बैंक निफ्टी में यू कैन सी 42,300 पे आज अच्छी कॉल राइटिंग हुई है. कॉल एडिशंस हुए हैं 42,300, 42,500. सो बैंक निफ्टी इज नॉट लुकिंग दैट बुलिश कंपेयर टू निफ्टी, बट ऑब्वियसली इफ बैंक निफ्टी मैनेजेस to cross 42,300, then we can see little short covering. So you may see a surprise rally also. Okay, but Nifty is definitely looking stronger. Now, coming to HDFC Bank, what do we have in HDFC Bank? Now, HDFC Bank में बहुत ही simple है. Let's look at the daily chart. Okay, now daily chart में you can see there has been a lot of movement here. ठीक है. So इसने क्या किया, बेसिकली ये रेंज में था बैंक निफ्टी, एक दिन अपसाइड ब्रेकआउट किया, वापस रेंज में आ गया, एक दिन लोअर साइड ब्रेकआउट किया, वापस रेंज में आ गया. राइट, तो बैंक निफ्टी ऐसे ही कंफ्यूज कर रहा है. तो नाउ यू हैव टू पिक अ साइड. ओके, फॉर मी इट इज वेरी सिंपल. अगर बैंक निफ्टी ने 50 में ब्रेक डाउन किया था, ओके, और अगर उसको ये गैप फिल करना था जो 200 ईएमए के साथ भी कोइंसाइड कर लेता, तो इट शुड हैव कंटिन्यूड द मोमेंटम हियर. नाउ दिस रिवर्सल व्हाट बैंक निफ्टी में हुआ है, देयर आई फील कि बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ बार बार, एचडीएफसी बैंक, ये जो रिवर्सल हुआ है, आई डोंट थिंक एचडीएफसी बैंक इज इंटरेस्टेड इन रीटेस्टिंग द 200 ईएमए अकॉर्डिंग टू मी. नाउ व्हाई डू आई से दैट, बिकॉज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आज उसने अपना 21 ईएमए, सब ईएमएज उसने रिक्लेम कर लिए आज. ओके, इवन दो बैंक निफ्टी वाज वेरी स्लगिश. So looking forward now, what are the, if I look at the smaller time frames, ठीक है, directly let's go to the 15-minute time frame. अब 15-minute time frame पे directly we've had a U-shaped recovery. Okay, so what is my bias tomorrow? If Bank Nifty is trading above this 1611, okay, which is today's high as well, 1611 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, then definitely you can go long in Bank Nifty. What are the targets that we can look at? First target will be this high 1621 and followed by this zone 1642 to 1645. Okay, 1640 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग हुई हुई है. If I show you the open interest in Bank Nifty, the Bank Nifty बोल रहा है HDFC Bank, if I show you the open interest, so you can see 1640 पे maximum call writing हुई हुई है. Right, we have decent unwinding happening today at 1600. You can see काफी unwinding हुई है. So this is the story, guys. Please like, share, and subscribe to the channel. All the very best for tomorrow. Trade safely. Have a nice trading session.